Welcome in the third unit. In this playlist, we will cover the complex integrations and the related topics which are in our syllabus. And first, to understand the complex integrations, we need the simple curve, Jordan arc, closed curve, simple closed curve. So first of all, we will study all these definitions. So complex integrations, there is a complex functions, that is your f of z, and your complex variable is z, and to find the integral we need a curve in the complex plane. This type of curve is there, maybe of this type. It depend upon the value of the theta. You are taking the rotation here, so here we need a ZT means यहाँ आप क्या करेंगे, this is your complex plane, there are the points, this point Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 and so on. So these points are on a curve, so they will follow some relations. ZT is equal to, suppose you are saying xt plus iota of y of t, and xt and yt are continuous curve and t is greater than equal to a, less than equal to b. In a real, you have done the integration of like this in your previous classes, x a to b. So here x value is greater than equal to a, less than equal to b. This is on an interval on the x-axis, and corresponding integral is this one. This was done in your previous classes, but in complex integration your function is complex valued functions and z is your complex variable, and there is a need of this type of curve. So first of all, we will study the simple curve, closed curve, Jordan arc, simple closed curve. All these definitions we will take here. So first of all, what is the definition of complex integrations? So what we required here. So first we will study the continuous arc. It is also called simple arc. In examinations, there may be a definition of 1 marks, define the simple arc and give the example of simple arc in the given interval. So a set of points in your complex plane is said to be in a continuous arc or simple arc if first of all your x, yani real part of your complex variable, that is z, that is xt, and y of t, both are continuous functions of real parameter t. तो हम ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा टू डिस्क्राइब द पॉइंट्स ऑफ सी बाय मीन्स ऑफ दिस z is equal to zt, and we are saying zt is nothing but xt plus iota yt. Same definition you can write in this form also. Your t is greater than equal to a, less than equal to b. Let us take an example from the Churchill book. There is an example of simple arc is this one. So this is your x-axis and your y-axis. These are the points in your complex plane. So this is first point, second point, starting from here. This is your a point, z at a. You can say z at a. This is end point. Suppose this is z at b. So this is your z1, z2, z3 and z4 corresponding to every value of t in the given interval a to b. So this curve, as xt and yt both are continuous on this curve, so this is simple arc. Maybe there is an example. The polygonal lines z is given by x plus iota x when x is greater than equal to 0, less than equal to 1, and z values is x plus iota when x is greater than equal to 1, less than equal to 2. This is my simple arc. You can also say simple curve. तो सिंपल आर्क क्या बनेगी आपकी, x प्लस आइटा x when x is equal to 0 to 1. Suppose your x is equal to, suppose x is equal to 0.
You can say it x is t, y of t. Okay. Then t is equal to 0 to 1 भी कह सकते हैं आप. In term of t अगर आपने पैरामीटर इसे कंसिडर करना है. ठीक है. तो now draw this arc in your argand plane. So for this when x is 0, the imaginary part of this z is also 0. So origin is, this curve passes through the origin. So I am taking 0 point. From 0 to 1 there are infinity many points, and 0 to 1 again on the y-axis also infinity many point. Corresponding to every point there is a complex number. Suppose I am taking half here and half here. So real part is half and imaginary part is again half. So it gives this point. So up to this point location is 1, 1. You can say this is z, which is corresponding to 1 plus iota, this point. Okay. Then 1 to 2. If I take x is equal to 1, it becomes 1 plus iota. So it started from this point. Then you are increasing the value of x from 1 to 2. 1 to 2. The imaginary part remains the same. That is fixed here, 1. Only the value of the real part is continue changing. So you can draw this one. So this arc consisting of this line segment and this line segment. This line segment is corresponding to 0, 0. So you are saying this is 0 to 1 plus iota, and this line segment is from 1 plus iota to 2 plus iota. So these are the two examples of the simple arc. You can take one more example. Suppose your z, that is equal to e की power iota theta. I already told this is the polar form, your complex variable. So you can write cos of theta plus iota sine of theta. Here x is function of theta and iota, y is, they both are continuous curve. You know cos theta and cosine theta, and the interval here is given theta is greater than equal to 0, less than equal to pi. Before giving the example of the this example, we should talk about the orientations, positive sense or negative sense. So I will do that in the next part of this first lecture. So first draw this. Suppose there is a simple arc. So e की power iota theta cos theta iota sin theta. This is the circle, and 0 to pi indicate me that this is half circle. Theta on this line is 0, and theta on this line is pi by 2, and theta on this line is, this is pi. This is a circle whose radius is here 1 unit. So I am taking this distance approximately 1, and you are drawing this one. Here my orientation is anti-clockwise 0 to pi. So I will put an arrow here. This my simple curve. This is half 0 to pi. If I take 0 to 2 pi, it will be a closed curve. I did not tell yet now what is a closed curve, so I am not taking the example. So just a simple arc. Your xt and yt both are continuous functions of your argument theta, and theta is varies from in the interval that is a to b. Here values is 0 to pi. So this is the simple arc which is represented by the semicircle. So here is the definition of a simple curve. Now let us take the definition of closed curve. So when we talk the closed curve, when we take the orientation, there is need of a multiple point of the arc. Why we am talking about the multiple point? Because suppose this is your curve. If you take this theta is 0 to 4 pi, in that case you will take the round 2 times on this circle. So in that case, suppose this is point, so theta is 0, next theta is 2 pi,
next theta is 4 pi. The value of this z is same at theta 0, theta 2 pi and theta 4 pi. So this point theta 0, 2 pi and 4 pi, this is known as multiple points. So if in examination, suppose there is a definitions, what are the multiple point of a arc? So what we will write there? You will say a point Z1 is called multiple point of the arc if जो आपका रिलेशन है आर्गुमेंट का विद योर एक्स टी एंड वाई टी. I gave example in term of theta and here I am taking the t because in the book there is t. Okay, so this point Z1 that upon your t given by this relation is satisfied by more than one value of t in the given range. जैसे आपको मैंने बोला ना थीटा 0 to 4 pi, तो रेंज आपकी क्या हुई 0 to 4 pi and this Z1 has same value at 3 points corresponding to t is equal to 0, 2 pi and 4 pi. Okay, so these points are known as your multiple points. We also called if it has two values same at a single मतलब zt has a value at 2 points of value t. In that case this is called double point. Okay, now I'm taking the sense of rotation. जैसे आप पॉजिटिव सेंस में मूव कर रहे हैं या नेगेटिव सेंस में, तो देयर इज पॉजिटिव सेंस ऑफ आर्क. द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द पैरामीटर t इज कॉल्ड द पॉजिटिव सेंस ऑफ द आर्क. जैसे इस क्वेश्चन में आपका मूव कर रहा है, in this question I am moving on this, theta is 0 here. If I am taking this line here, theta will be pi by 4 and theta pi by 2. So this is positive sense. And orientation arc में oriented arc क्या लोगे आप? An arc with sense attached is called an oriented arc. जैसे यहाँ पे हमारी oriented arc क्या बनी है? This arrow sign. तो I will put the arrow sign in which my argument is, in which my parameter that is theta is changes. ठीक है, तो an arc with the sense attached is called an oriented arc and the sense is indicated by the arrowhead. Suppose you are from here and here and your curve is moving on this, so this is your curve. Simple arc is denoted by this one and its name is C and its sense is denoted by this arrow sign. Maybe arrow sign is like this, maybe आपका curve यहाँ है. Suppose you are moving on this, so this is clockwise or anti-clockwise depending upon your caution. Now the definition of closed curve. Simple arc, simple curve आप कर चुके हैं, ठीक है. तो क्लोज कर्व में क्या करेंगे, देखिए ये एग्जाम्पल जो आपने किया है दिस इज सिंपल कर्व या सिंपल आर्क भी कह सकते हैं. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल आर्क. ठीक, तो सिंपल आर्क में क्या है कि अगर आपका कोई पॉइंट है जहाँ पे टी की वैल्यू है, अगर वो डिस्टिंक्ट है तो कॉरस्पॉन्डिंग योर पॉइंट्स जो है Z1, ZT1 एंड ZT2 बोथ आर डिस्टिंक्ट. तो 1 फंक्शन वाली डेफिनेशन ही चलेगी जो आपके रियल सेंस में. ठीक है, नाउ वी नीड द क्लोज कर्व. अगेन योर कर्व विल बी योर वेरिएबल दैट इज ZT. सेट ऑफ पॉइंट्स बनेंगे और आपकी रेंज क्या होगी, A to B होगी. दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ योर बिगिनिंग एंड एंडिंग, यानी जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आपने एंड किया, बोथ आर इक्वल. So these are example of closed curve. Suppose I have construct a diagram here. Suppose I started here and move on this, maybe like this. This may be indication of your orientation. ठीक है, और ये यहाँ पे, तो this point is the intersection point. ठीक है, here देखिए यहाँ से suppose आपका start हुआ, ये A पॉइंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने ऐसे मूवमेंट की और वापस यहीं पहुंच गए. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड कर्व. ठीक है, अब क्लोज कर्व में भी सिंपल आर्क होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है. जैसे ये एग्जाम्पल था Z = E के आइटा थीटा, थीटा 0 to pi.
ये आप अभी कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कर्व। क्या ये क्लोज है? नो, दिस इज़ नॉट क्लोज्ड, दिस इज जस्ट अ सिंपल आर्क। सिंपल कर्व भी कह सकते हैं आप इसमें, ठीक है। सपोज आई एम टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल, आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा। सेकेंड एग्जाम्पल, जेड टी इज गिवन बाय ई की आइटा थीटा। दिस इज नथिंग बट a circle cos theta plus iota sin theta. If I said what is the modulus of this complex number, so this is z is equal to under root of cos square theta plus sin square theta. Suppose you are saying this is x of theta and plus iota y of theta. तो mod z क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस डेफिनेशन इज मॉड जेड का स्क्वायर। सो ये यहाँ यूज़ करेंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. तो दिस इज अ यूनिट सर्कल विद सेंटर इज at origin. This is your 0 0 point and this radius is 1 unit and here theta is 0 to 2 pi. Here argument of this one is, argument क्या है आपका? That is your theta and this is nothing but tangent inverse of y by x. Okay, so this we already studied this in first unit and second unit. So this is your a circle with the radius 1 unit and oriented in counterclockwise. Counterclockwise means in this directions. Anticlockwise भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। Now take the one more example. Suppose your arc is z e की माइनस आयटा थीटा। अच्छा, इसमें क्या ये क्लोज है? देखिए यहाँ से सपोज आपने स्टार्ट किया तो z एट 0, वैल्यू ऑफ z एट, अच्छा यहाँ आप थीटा कर लीजिए। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, अगर यहाँ t है तो यहाँ पर भी t होगा। ओके, तो इट्स वैल्यू z एट 0 एंड लास्ट इज z एट 2 pi. Both values are, suppose you are putting it here or here, z at 0 e की power iota 0 that is 1 and z at 2 pi e की iota 2 pi. If you want to calculate, z at 0 is what? E की power iota 0 and this is e0 is 1 and z at 2 pi, this is e की power iota 2 pi and cos 2 pi plus iota sin 2 pi क्या बनेगा? cos 2 pi plus iota sin 2 pi. What is the value of sin 2 pi? 0. Cos 2 pi is 1. So this is also a unit circle. Radius is 1 unit, center at 0 0 and oriented in counterclockwise direction. So this is a simple closed curve. पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा गिव एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्लोज कर्व। ये आपके पास फिगर हो जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सिंपल क्लोज कर्व है, कौन आपका सिंपल आर्क कर्व है और कौन आपका जॉर्डन आर्क है, ठीक है। फिर कॉन्टोर, वी नीड कॉन्टोर हेयर टू फाइंड द इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस। ओके, लेट अस टेक 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल आर्क और क्लोज कर्व। नाउ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल क्लोज कर्व है या सिंपल आर्क कर्व है या आपका मल्टीपल पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो आर्क इज जेड ई की माइनस आयटा थीटा, थीटा इज फ्रॉम 0 to 2 pi इज द यूनिट सर्कल। अब आप इसे देखेंगे तो इसमें आपका जो एंगल मेजरमेंट होगा दैट इज नथिंग बट, देखो जेड थीटा ई की पावर आयटा एंड हेयर एंगल इज माइनस ऑफ थीटा। थीटा 0 to 2 pi है, वैसे तो पॉजिटिव इस तरह से बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस ऑफ थीटा है तो योर एंगल इज मेजरमेंट इज दिस डायरेक्शन। तो दिस एंगल मेजरमेंट इज माइनस ऑफ थीटा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के हिसाब से होगा ना, ऐसे मूव, जैसे ऐसे मूवमेंट हो तो क्लॉकवाइज। अब 0 to 2 pi है तो थीटा इज 0 अगेन हेयर एंड 2 pi व्हेन यू टेक द राउंड हेयर माइनस 2 pi, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे करके ये मूवमेंट बनेगी
जहाँ से स्टार्टिंग वहीं पे क्लोज, तो जेड एट 0 और जेड एट एंगल इज माइनस माइनस डिनोट योर clockwise directions, so this is equal to 2 pi again and its value is again 1. So it's a simple closed curve. Then you can write here simple closed curve, simple closed curve. ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई मल्टीपल पॉइंट नहीं है, जस्ट जो बाउंड्री लास्ट है, जहाँ से सिंपल, जहाँ स्टार्ट हुआ और जहाँ एंड हुआ वहाँ पर जेड की वैल्यू यानी आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की वैल्यू सेम है. ठीक, नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल. देयर इज मल्टीपल पॉइंट इन दिस. सपोज योर आर्क इज गिवन बाय द रिलेशन जेड इक्वल टू ई की आयटा टू थीटा एंड थीटा इज 0 to 2 pi. Here theta 0 से 2 pi, but I am using it in the form of 2 theta. This is important. ठीक है, तो इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो अगेन दिस विल बी अ सर्कल whose center at 0 0, radius is 1 unit. ठीक है, and your argument here is given by, suppose you are saying your argument is 5, तो 2 थीटा इसमें एंगल होगा आपका. तो आपका जो फाई है दैट इज 0 to 2 pi. तो थीटा अगर आपका 0 है, यहाँ थीटा आपका π/2 है, यहाँ थीटा आपका पाई एंड दिस टेक कंप्लीट राउंड. अब हेयर थीटा इज पॉजिटिव, सो यूर ट्रांसवर्स जो सर्कल होगा दैट इज ट्रांसवर्स एंड पॉजिटिव है थीटा, तो दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसे कह सकते हैं. ओके, अब देखना है कि कितनी बार मूवमेंट करेगा. देखिए, जब आपका 0 से पाई होगा, आई एम सेइंग थीटा इज 0 to पाई, तो 2 थीटा एंगल आपका फाई है, तो फाई की वैल्यू जब थीटा 0 होगी तो फाई भी 0, लेकिन जब थीटा पाई होगा तो योर फाई इज 2 पाई. ठीक है, तो योर फाई दिस एंगल moves here complete round this one in the theta 0 to pi. ठीक है, उसके बाद जब आप दोबारा थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो योर रोटेशन इज 2 टाइम, तो दिस मूव्स टेक 2 राउंड here corresponding to your angle is 2 theta. ठीक है, तो दिस इज not a simple closed curve due to the 2 complete round. Okay, so here in this lecture we completed simple arc and simple closed curve. In the next lecture we will study the Jordan arc. Thank you.